Hello everyone. Today I will discuss the relations and functions. Relations and functions. What is relation and functions? A Cartesian product, two set A and V. The Cartesian product rate V, rate C, rate rate C, rate S. This is called a set of product A cross B. ठीक है. Here also A cross B arises, rate B, rate C, that is A cross B. Relation is very easy chapter. This find the value ever x plus y, y minus 2 equal to 3, 1. For x plus 1 equal to 3, x plus 1 equal to 3, x equal to for x 3 minus 1 equal to 2, x equal to 2. For the next relation, y minus 2 equal to 1, that is y equal to 1 plus 2 equal to 3. That's clear. Next, एक्सरसाइज में क्या बताया था, x by 3 plus 1 equal to 5 by 3, x by 3 plus 1 equal to 5 by 3. Here relation and mapping, NCERT का book, relation and mapping, relation and function, मैथमेटिक्स का. यहाँ पर एक्सरसाइज 1, that's mean discuss the exercise 1. X number 1, x by 3 plus 1 equal to 5 by 3. X by 3 equal to 5 by 3 minus 1. That 3, 5 minus 3 equal to 2 by 3. X by 3 equal to 2 by 3. 3 cancel, x equal to 2. Also other hand, y minus, next part, y minus 2 by 3 equal to 1 by 3. Y equal to 1 by 3 plus 2 by 3, that is 3 by 3 equal to 1. X equal to 2 and y equal to 1. Y equal to 1. That's my answer. ठीक है. 2. Number 2. If a set A is a set that have 3 elements, 1, 2, 3. Some you can see x equal to 3 element, and also b equal to 3, 4, 5, also 3 element. এবার বলছে find the number of element in A cross B. A cross B जब होगा तब क्या होगा,
लाइक एक्स वाई एंड जेड। तो एलिमेंट किस तरह आएगा, x,3 x,4 नेक्स्ट यहाँ पर x,5 दैट्स एंड x का ख़त्म, x हो गया अगर y, y,3 y,4 y,5 इस तरह आएगा जेड एलिमेंट। तो एलिमेंट हाउ मेनी एलिमेंट्स आर हेयर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 एलिमेंट होगा। ठीक है, तो दैट्स मीन्स दैट्स 3 क्रॉस 3 into 3 equal to 9। That's a simple method। ठीक है, to number 2 is clear। नंबर 3 क्या है, if g equal to 7,3, g equal to 7,8, h equal to 5 4 2, g क्रॉस एस क्या होगा, g का फर्स्ट एलिमेंट 7, g का फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पर 7,5। ठीक है, दैट्स क्रॉस प्रोडक्ट 7 कार्टेशियन प्रोडक्ट 2 यहाँ पर 8,5 8,4 8,2, that is g cross s, also the element of s cross g, that's clear। 5 क्या होगा, 5 7 नेक्स्ट होगा 5 8 नेक्स्ट होगा 4 7 नेक्स्ट होगा 4 8 नेक्स्ट होगा 2 7 एंड 2 8। That is S cross Z। Clear? Clear। नेक्स्ट क्या है, अभी नेक्स्ट हो गया 3 नंबर 4, what state whether each of the following statement are true or false। if the statement is false, rewrite the statement correct। number 1, that is P equal to Mn, Q equal to Mn, Nm, P क्रॉस Q, दैट्स क्या होगा, पहले टर्म Mn, नेक्स्ट M, नेक्स्ट क्या होगा NMQ, NN, नेक्स्ट NM। यहाँ पर Mn NM only, Mn NM, missing term is NN is missing term, that is not correct। the correct statement is that। ठीक है, नंबर 2 3 का ऑफ नंबरिंग 2, if A and that is clear। अभी
नंबर 2 होगा if A and B are non-empty sets then A cross B is a non-empty set of order pair. That A cross B is a non-empty, B non-empty. Non-empty means what is the non-empty? Non-empty क्या बताया था? A have on at least one element. A not equal to phi. Phi means there is no set. ठीक है? If there is one set 0, that is non-empty. That is non-empty. Phi denote the empty set. यहाँ पर A का only one element is 0, so A is non-empty. Non-empty clear? What is non-empty? Non-empty says this set is not equal to phi. Minimum one element here. ठीक है? तो A equal to suppose let A equal to x y and B equal to a set what is PQ. ठीक है? तो A cross B non-empty. A cross B must be an element. ठीक है? That's number 2 is correct. Number 3. नंबर 3 क्या बताया था कि A equal to 1, 2 and B equal to 3, 4. B intersection phi. Phi means यहाँ पर phi means that's empty set. That's empty set. Null set. Empty set or null set. Intersection of any element, any set with null set is null. That means B intersection phi equal to obviously phi. The properties of set. Also B union phi, that is B. Any element, any set union with phi set equal to this set. ठीक है? That is clear. B intersection phi equal to phi. Here for A cross phi there is no element equal to obviously phi. Option number and that is correct. अभी 5 होगा. 5 क्या बताया था? A equal to -1, 1 बाबा. That's -1, 1 A cross A. What is this? -1, -1, -1, -1, -1. Obviously 1, -1 and the last term is 1, 1. ठीक है?
अभी वो ए क्या होगा, इसके साथ इसका एलिमेंट पहले -1, अभी होगा -1 -1 अभी होगा -1 -1 और होगा, दैट्स क्लियर, दैट्स कार्टेशियन प्रोडक्ट विथ ए होगा -1 1 -1 -1 1। अभी इसका होगा 1 -1 -1 1 -1 1। क्लियर। अभी इसका होगा लास्ट टर्म का 1 1 -1 and 1 1 1। This is A cross A cross A। क्लियर। अभी 5 हो गया 6। A क्रॉस B इक्वल टू दैट फाइंड ए बी। ए का एलिमेंट क्या क्या होगा, ए होगा पहली एलिमेंट का पहली ए बी बी, ए इक्वल टू ए कॉमा बी, बी नेक्स्ट एलिमेंट एक्स वाई दैट्स एक्स वाई एक्स वाई। नंबर 6 7 A equal to 1 2 B equal to 1 2 3 4 C equal to यहाँ पर D verify, that will be verify B intersection C। अभी B intersection C क्या होगा, दैट्स मीन B एंड C का कॉमन एलिमेंट, B एंड C का कॉमन एलिमेंट क्या क्या है, B का एलिमेंट 1 2 3 4, C का एलिमेंट 5 and 6। There are no common element, that's equal to 5। B and C, obviously A cross B intersection C equal to obviously 5 होगा। लेफ्ट हैंड साइड इज 5, राइट हैंड साइड क्या होगा, यहाँ पर एक प्रॉपर्टीज है, वेरीफाई करना पड़ेगा, तो प्रॉपर्टी नहीं लगाना है। ओके, ए क्रॉस बी क्या होगा, ए क्रॉस बी एंड ए क्रॉस सी। यहाँ पर बी और सी का एलिमेंट कोई कॉमन है क्या, नहीं, बी और सी का कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। ऑब्वियसली यहाँ पर जो एलिमेंट आएगा, ये रेड वाला एलिमेंट कोई एलिमेंट के साथ सिमिलर नहीं होगा। सो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी ऑब्वियसली 5 होगा। नो कॉमन एलिमेंट, नो कॉमन एलिमेंट मीन्स ए यहाँ पर एलिमेंट यहाँ पर है, नो कॉमन एलिमेंट, सो इंटरसेक्शन क्या होगा, इंटरसेक्शन ऑब्वियसली 5 होगा। दैट्स इंडिकेट यहाँ पर 5 यहाँ पर 5 है, क्या होगा, दैट्स 5 सो दैट इज similar। A is verified, नंबर 1 इज वेरीफाइड, नंबर 2 चेक करना पड़ेगा क्या है यहाँ पर।
A cross C and B cross D subset. A cross C is subset of B cross D. Subset क्या है? Subset, what is subset? Subset क्या है? Suppose A is set. Suppose A is set. A का element X, Y, Z and B is another set X, Y. Here all the element of B contain A. यहाँ पर X, X, Y, Y. That's यहाँ पर A का एक एलिमेंट एक्स्ट्रा है. So B is subset, proper subset of A. ठीक है. It subset also proper subset. Proper subset means B that is subset. That is A is subset of A. B is subset of A. And that is called proper subset. B is proper subset of A. Clear? यहाँ पर B is proper subset of A. Obviously B have at least one less element, and that means C, B and A may be same, may be equal হতে পারে, equal may be equal. ठीक है. अभी वेरीफाई करना पड़ेगा. अभी वेरीफाई करना पड़ेगा. A क्रॉस C, A and C. A का एलिमेंट क्या क्या है? 1 5 होगा, 1 6 होगा, 2 5 होगा और क्या होगा? 2 6. ठीक है. B क्रॉस D क्या होगा? B के साथ D, B के साथ D. ये तो बहुत ऑब्वियसली यहाँ पर ज़्यादा एलिमेंट होगा. 1 5 1 6 1 7 होगा. यहाँ पर एक ज़्यादा एलिमेंट है ना, तो this is subset. And obviously we have more element. B cross D have more element because B have more element of A. And also there is C. C is subset of D and A is subset of B. That's clear. C is a subset of D and A is subset of B. Obviously A cross C is subset of B cross D. ये होना चाहिए, किसी तरह होना चाहिए, because that's implies. ठीक है. अभी नंबर 8
let a equal to 1 2, b equal to 3 4, write a cross b. How many subsets will a cross b have? पहले बताना था कि ए क्रॉस बी का एलिमेंट क्या है, सबसेट बाद में। ए क्रॉस बी का एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट इज 4, ठीक है। तो सबसेट का जो फॉर्मूला है ना, कोई एक सेट ए, एलिमेंट एन, number of element of A is n, then number of subset 2 to the power n, 2 to the power, obviously यहाँ पर जो सबसेट होगा 2 to the power 4 इक्वल टू क्या होगा 16, ठीक है। नंबर 9, let A and B be two sets of that number of element of A equal to 3, number of B if x1 y2 z1 are in A cross B, find AB. Here x, y, z are distinct element. यहाँ पर क्या होगा, ए का एलिमेंट ऑब्वियसली होगा एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। बी इक्वल टू होगा, क्या होगा, यहाँ पर क्या क्या एलिमेंट है, 1 2 1, ऑब्वियसली 1 एंड 2, बी का एलिमेंट 1 एंड 2। यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट 3 और यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट 2। फाइंड ए एंड बी, ऑब्वियसली ए इक्वल टू एक्स वाई जेड और बी इक्वल टू 2। नंबर 10, Cartesian product. The Cartesian product A cross A have 9 elements. Then among which are found -1, 0 and 0, 1. Find A remaining element of A cross B. A cross A का remaining element. That is home text. Thank you. वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एवर।